So we are going to read about the Burj Khalifa. Is there a song? दिला दूं तुझे बुर्ज खलीफा. Have you promised this to anyone? Not a flat in Burj Khalifa. Yeah. The entire Burj Khalifa. फिगर ऑफ स्पीच होता है. इसको कहते हैं हाइपरबले. हाइपरबले. एग्जैजरेट करके बात बोलना. मतलब तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा जी. बहुत बड़ी बड़ी चीजें करूंगा. दिला दूं तुझे. ठीक है भाई. इसीलिए लड़कियां लड़कों को बारे में कहती हैं, उन पे यकीन नहीं करा सकता ऐसे गानों की वजह से. हम लोग बोलते हैं कहो संतरा खाओगी. भाई जो पॉसिबल है, आइसक्रीम खाना है, स्टफ लाइक दैट. ना ना ना. डोंट इवन गो देयर. चांद सितारे. नो. आई आई थिंक यू नीड टू हैव अ सर्टेन टाइप ऑफ पर्सनालिटी to make such promises. In my entire life so far, I've never made any such promises to anybody. I have sung songs with those lines, and I kind of felt the emotions there, and the music and the everything, but never said from my side to anybody ever anything impractical or impossible. Like I said, you need to have a certain type of personality to make comments of that kind. Not everybody can say things. दिला दूं तुझे बुर्ज खलीफा. Read about Burj Khalifa. Complete the questions. So, some buildings take the, some buildings don't take the. बुर्ज खलीफा के पहले द नहीं है, गौर करें. लेकिन व्हाइट हाउस. ऑलराइट. So you have to be just a little careful. Which buildings have the, which buildings don't have the before them. The Taj Mahal, the Eiffel Tower, right? The Taj Mahal, the Eiffel Tower, the we had this building in England, the Gherkin in London. First page of Unit 9, the Gherkin, the Eiffel Tower. You have the with these buildings. But with Burj Khalifa, we don't use the, it's random. No particular rules. Have to be just careful. Where is Burj Khalifa? It is in Dubai. Question number 2. When did it open? When did it open? It opened in January 2010. It opened in January 2010. 3. How high is it? It is 828 meters high. Okay. 4. How many floors are there? There are 160 floors. Next. How much did it cost?
to build. It cost 1.5 billion US dollars to build. Right. Wait. Don't worry. We have a chair. We have a chair for you. Okay. Come sit here. No issues. Successful. So you had a haircut. You had a haircut. When? 2 days ago? Just yesterday? Yesterday. And you? Did you also have a haircut? Who gave you the cut? Mom? Did mom give you the cut? Who cut your hair? Mom or a hairdresser? A hairdresser. You guys went to a hairdresser. Normally, when girls are small, their moms give them a haircut. When my daughter was small, 2 times I gave her a haircut. Yeah. It was fun. It's fun cutting girls' hair. It's more, I think it's easier. Small girls' hair, Boys' hair is not that easy to cut. And if you're a grown-up girl, then again, it's more difficult. But just the simple haircut, like, you have to make the edges, you have to trim the edges only. Did you get a haircut from your parents ever in your childhood? You guys, ever? My mom cut my hair when I was small. Yeah. Sometimes Chachi did it, my auntie. All the children, one after another. That day was haircut day. We were 8, 9 of us. Yes. There were 8, 9 of us. We were 8, 9 of us now. There were 8, 9 of us. हम लोग 8, 9 लोग थे. One after another, one after another. Haircut day. 6. How long does it take to clean all the windows? It takes 4 months. It takes 4 months. 2. Complete the sentences. It is the tallest building in the world. It is the tallest building in the world. 2. It has the fastest lift in the world. 3. It has the highest mosque and swimming pool in the world. 3. Answer the questions. How long did it take to build the tower? It took 6 years. It took 6 years. What is on the 76th floor? There is a swimming pool. On the 76th floor, there is a on the 76th floor, there is a swimming pool. There is a swimming pool. 3. Is Taipei 101 taller than Burj Khalifa? No, it isn't. How high is it? It is 508 meters. It's only 508 meters. Who is Bill Baker? He is the structural engineer for the building. He is the building's structural engineer. What was the most difficult problem? The most difficult problem was the wind. Okay. How much does the top of the building move in the wind? It moves 1.5. 1.5 meters. Think of a building which goes like this, guys. A building that goes like this in the strong winds. Okay, 1.5 meters. This much. If a child wants to, be on a swing, wrap them there. Wrap the child at the top of the building. मजा आ रहा है. Okay. कैसे बनाया होगा? Next. There is a documentary available on Discovery about how they built this structure. It was a big challenge. It's a technological marvel. And now they're building another more than 1 kilometer high, 1100 meters, nearly 1100 meters in Saudi Arabia. Do you know what it is called?
Zedda Tower. Yes. 7. How many people live and work there? 12,000 people live and work. 12,000 people. Is it hotter at the top or at the bottom? It is hotter at the bottom. It is hotter at the Bottom. Okay. So let's read the text. Higher than the clouds. Is it possible? It is actually. It is possible. There are some buildings in this world. I mean, this is the tallest, of course. Okay. And when you're at the top, sometimes it is possible that the clouds are below you. It's possible because it's 828 meters high. Think about how high it is. Nearly 1 kilometer straight up. I would love to just take a look at the building standing on the road. Oh, higher than the clouds. Comparative, higher than the clouds. आसमानों से भी ऊंचा, बादलों से भी ऊंचा. Higher than the clouds. It reaches into the sky. This building reaches into the sky. Reaches into the sky. It reaches into the sky for nearly a kilometer. Not a kilometer, nearly a kilometer. 828 meters is very little short of 1 kilometer. It's nearly a kilometer, 828 meters. 1 kilometer is 1,000 meters. 1 kilometer is a kilometer. हम लोग हिंदी में बोलते हैं किलोमीटर, लेकिन इंग्लिश में किलोमीटर होता है. क्या होता है? ओके. देखो मैं सुनाता हूं तुम्हें. Wait. I will play the sound for you. Stress is a very funny thing in English. Okay, so the word has multiple pronunciations, guys. The word has multiple pronunciations, not just one. Let me play both the pronunciations, different pronunciations. Okay, get ready to listen to the pronunciation and compare the way we say it. Okay. Kilometer. ये तो हो गया. Kilometer, kilometer. Say kilometer, Kilometer. kilometer, kilometer. Stress on the first syllable. Kilometer. Keep a stress. Kilometer, Kilometer. kilometer. Okay. Now listen to this one. Different pronunciations. Kilometer. Kilometer, kilometer. Okay. The stress is now on the second syllable. Kilometer, kilometer, Kilometer. kilometer, Kilometer. 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 Got it? Kilometer. Okay. So the word has different pronunciations, one kilometer and the other kilometer. Okay. It reaches into the sky for nearly a kilometer. Nearly a kilometer. A kilometer. Nearly a kilometer. Either way. But kilometer दोनों बराबर बराबर नहीं. हिंदी में क्या है? बराबर बांट देते हैं. सब बराबर. Flat. कोई stress syllable नहीं. But in English we have stress syllables. या तो शुरू में बोलो kilometer, या तो दूसरी बार kilometer. Okay.
It reaches into the sky for nearly a kilometer. Burj Khalifa is, for the time being, the world's tallest building. Burj Khalifa is the world's tallest building, not for forever, for the time being. For the time being means not forever, not forever, for the time being. My kitchen is being reconstructed. My kitchen is being, so for the time being, we are cooking on the roof. For the time being, we are cooking on the roof. We are cooking. On the Why? your kitchen is The kitchen is being reconstructed. All the boys are absent. All of them. Hostel boys, all of them. Any news about them? Why? You are from hostel, right? Are they in hostel or they are back in the villages? Oh, I see. Yes, quite a few exams are going on. Semester one exam is going on, then 12th exams are starting the day after tomorrow. And then say, what did you say? February the 1st. Yeah, on February the 1st. Burj Khalifa is, for the time being, the world's tallest building. So, for the time being, the uh, captain has fallen sick. So another another team member becomes the captain for the time being. Okay. For the time being means temporary or permanent. For the time being. Okay. Burj Khalifa is, for the time being, the world's tallest building. Let's make some more examples. My friend is staying with me for the time being. All right. He is staying. Yeah, for the time being, for some time. Temporarily, not permanently, for the time being. Our team is number one team for the time being. Means not forever, for the time being, it is number one. Okay. So when you want to convey the idea that it is not forever, you want to suggest that, then you add the expression for the time being. I'll give you a funny example. So I call my girlfriend and I say, my wife is going to her Maike. Would you like to come and live with me for the, okay, for the time being? That's silly, right? For the time being means temporarily. Burj Khalifa is the world's tallest building for the time being, for some time. Because soon another building will take over. Which building? Zeddah or Jeddah? Z or J? Zeddah. Zeddah. Z. Zeddah. Okay, Zeddah Tower is going to become the tallest building in the world. But for the time being, it is Burj Khalifa. So when you want to suggest that it is for some time, then you add the time, add the expression for the time being. My aunties have come to stay. My aunties have, आंटी लोग आई हुई है, तो अभी अभी तो फिलहाल हम भैया के रूम में सो रहे हैं. तो यहाँ अभी तो फिलहाल के लिए क्या इंग्लिश बोलना है मुझे? ये जो हिंदी में है ना, अभी तो फिलहाल हम भैया के रूम में सो रहे हैं. क्लियर है ना कि हम हमेशा वहां नहीं सोते हैं, ना सोएंगे. ओके. तो आई एम स्लीपिंग इन माई brother's bedroom for the, because aunties have come to stay, so they are using my bedroom. They are sleeping in my bedroom. So I am sleeping in my brother's bedroom for the time being. इसके हिंदी समझ में आ ही गया होगा. अभी, फिलहाल के लिए, फिलहाल, right? फिलहाल के लिए. Okay, for the time being.
बुर्ज खलीफा इज फॉर द टाइम बीइंग द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंग। अच्छा बताओ, फॉर द टाइम बीइंग, चार वर्ड्स, ओके, चारों वर्ड जान पहचान के है ना, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग जान पहचान का नहीं था। क्या समझे? यानी वोकैबलरी सीखने के लिए नए वर्ड सीखना जरूरी नहीं है, जो आप जानते हैं उन्हीं से नई वोकैबलरी सीख सकते हैं। अभी देखो क्या सीखा, फॉर द टाइम बीइंग, फॉर भी जानते थे, द टाइम बीइंग भी जानते थे, लेकिन साथ में कभी नहीं बोले थे फॉर द टाइम बीइंग। ओके, बुर्ज खलीफा इज फॉर द टाइम बीइंग द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंग, द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंग, दुनिया की सबसे द वर्ल्ड्स टॉल। अच्छा, जब बोलना होगा फिलहाल के लिए तो डाल देंगे, ऐसे क्या जरूरत नहीं है तो नहीं बोलना चाहते फिलहाल के लिए तो क्यों बोलेंगे, राइट? जब क्या किस लिए बोलेंगे फॉर द टाइम बीइंग? बताने के लिए कि भाई ये बात जो हम बोल रहे हैं ये थोड़ी देर के लिए, ओके, फिलहाल के लिए, अभी, फिल वक्त। पता नहीं ऐसे ही बोलते हैं क्या? ये भी सही है क्या? मेरे ख्याल से, मुझे 100% यकीन नहीं है कि मैंने सही बोला, बट फिलहाल के लिए तो पक्का। द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंग ओपनड, व्हाट ओपनड? सब्जेक्ट समझ में आया? क्या है सब्जेक्ट? द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंग ओपनड, सब्जेक्ट वर्ब दिखा, V2। ये डूअर है। ये कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जिसमें थोड़ा कंफ्यूजन होना लाजमी है हिंदी बोलने वाले को। मैं ऐसे टीचर्स को जानता हूं जो ऐसे सेंटेंसेस समझ नहीं पाते बेचारे, स्टूडेंट को छोड़ दो। आई मेट अ टीचर, इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट स्पोकन इंग्लिश सेंटर्स इन गया, called Oxbridge. And in Oxbridge, the best teacher, there are 5, 6 teachers, and there is a teacher, he is the best teacher, the most experienced, the senior most teacher. I had a conversation with him. If उसको इडियट बोलता हूं मैं उस आदमी को, क्योंकि वो टीचर है तो उसको चाहिए अपना नॉलेज बढ़ाना, लेकिन वो बैठ करके एक ही बात को दिमाग में बैठा लिया है और बोलता रहता है। क्या बोलता है? लास्ट जा रही थोड़ी ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस है। मैंने कहा क्या खराबी इसमें? आप सोचो, लास्ट खुद से जा सकती है। मैंने कहा लास्ट खुद से नहीं जा सकती, ये बात टेक्निकली करेक्ट है, राइट? अगर मैं बोलूं सूरज निकल आया है तो क्या ये बात टेक्निकली करेक्ट है? सूरज निकल आया, सूरज तो हमेशा था, तो क्या नहीं बोलते हम लोग? तो ये ग्रामेटिकली रॉन्ग सेंटेंस है। सूरज निकल आया है या सूरज डूब गया है, ये सेंटेंस टेक्निकली गलत सेंटेंसेस हैं। भाई सच्चाई ये है कि सूरज कभी डूबता नहीं, कभी निकलता नहीं, वो हर समय है, हमें दिखना बंद हो जाता है। लेकिन हम हिंदी में बोलते क्या है? सूरज डूब गया है, सूरज निकल आया है। तो क्या ये सेंटेंस गलत सेंटेंसेस हैं? तो इसमें ग्रामेटिकल एरर है इन सेंटेंसेस में। तो वो उस इडियट को लगा लास्ट जा रही है, वो एक गलत सेंटेंस है। आजकल आम ज्यादा बिक रहा है गलत सेंटेंसेस के लिए, आजकल आम, ठीक है, ये गलत सेंटेंसेस के लिए। क्यों भाई? ये गाना आजकल हर जगह बज रहा है, गलत सेंटेंस है, क्योंकि खुद से। तो पागल आदमी, नॉलेज बढ़ाओ। भाषा में 3 तरह के सेंटेंसेस मिलेंगे तुम्हें। एक जिसमें एक्टिव डूअर होगा, जैसे तुम कहोगे मैंने दरवाजा खोला, इसमें एक आदमी ने दरवाजा खोलने का काम किया। इंग्लिश बोलो बेटा, आई ओपन द डोर। एक होगा दरवाजे को तोड़ दिया गया, द डोर वॉज नॉक डाउन, द डोर वॉज डिमोलिश्ड, द डोर वॉज नॉक डाउन, नॉक्ड, KNOCKED, KNOCK, नॉक तो सब जानते हैं ना, कोई नया वर्ड मैं सिखाता नहीं, मैं पुराने वर्ड से नई वोकैबुलरी सीखा, कम ही 1% नई वोकैबुलरी, क्योंकि अभी आपको नई वोकैबुलरी का बर्डन नहीं लेना, आपको इंग्लिश भाषा का समझ बनाना है। वोकैबुलरी का बर्डन लोगे किधर से होगा? तो द डोर वॉज, सबको पता है कि किसी ने नॉक डाउन किया दरवाजे को। जब हम हिंदी में बोलते हैं दरवाजा खुला, एक लड़की बाहर आई, दरवाजा खुला, तो दरवाजा खुला इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? द डोर ओपन्ड। और ये एक ऐसा सेंटेंस है जो पहला और दूसरे दोनों से अलग है। इसमें डोर सही में खुद से नहीं खुलता है, लेकिन फिर भी नहीं बोला गया कि किसी ने खोला, दरवाजा खुला। ये एक जीरो पैसिव इसको कहते हैं, जीरो वॉइस कहते हैं इसको। क्या बोलते बेटा?
तीन तरह के सेंटेंस हो सकता है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, जीरो वॉइस। तो जरा ये बात उस इडियट को नहीं पता थी, और इतना सीनियर मोस्ट टीचर, ही वाज ओल्डर देन मी बाय द वे, ओके, एंड ही इज रनिंग वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन गया कॉल्ड ऑक्सब्रिज। एंड दैट इडियट, आई रिकॉर्डेड हिम सेइंग ऑल दीज थिंग्स, मैंने उसको रिकॉर्ड किया, बात कर रहा था मेरे साथ, मैंने कहा ये इडियट ऐसा बात करता है उल्टा पुल्टा, क्या ही बच्चों को बताएगा। वो बता रहा है कि दरवाजा खुला, क्या है सेंटेंस, ग्रामेटिकली रॉन्ग है, ये दरवाजा खुद से नहीं खुलेगा। ये सब मेरे दिमाग में 10th क्लास में परेशानियां आती थी, मैंने सोल्यूशन ढूंढ लिया। व्हेन यू हैव अ कंफ्यूजन यू विल फाइंड अ solution. To find a solution first you need to have a confusion, now what is the problem, right? तब ना सोल्यूशन निकालेंगे, प्रॉब्लम ही नहीं तो सोल्यूशन किस बात का। तो इफ यू आर हिंदी स्पीकर और इंग्लिश आपने बचपन से नहीं सीखा है, ग्रामर वगैरह पढ़ के सीखा, तो ये कंफ्यूजन आएगा कि दरवाजा खुला, कैसे खुला, अरे कैसे खुला नहीं खुला वो छोड़ो, हिंदी में तूने दोनों वर्ड अरेंज किए ना, दरवाजा खुला, एक इंसान, एक आदमी बाहर आया, तो कोई अजीब सेंटेंस तो नहीं लगा सुनने में कि दरवाजा खुला एक आदमी बाहर आया। इंग्लिश में इसको कैसे बोलेंगे बेटा, द डोर ओपन एंड एन ओल्ड मैन केम आउट, चलो मैंने बूढ़ा आदमी कर दिया, ठीक है। पहले सेंटेंस में लड़की बाहर आई, तो दूसरी बार एक ही दरवाजा नहीं था, टेंशन ना ले आप। ओके, द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंग ओपन, द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंग ओपन, बताओ क्या खुला बेटा, टॉलेस्ट बिल्डिंग है ना। ये अब बाद में देख देख के शक्ल मत हंसो, अब और एम्बैरेस मत करो, एक तो मेरा दिमाग खराब है, मैं उल्टा पुल्टा जोक बोल देता हूँ, और उसके बाद तुम लोग एक दूसरे की शक्ल देख के हंसते हो। द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंग ओपन, द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंग ओपन, द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंग ओपन, व्हाट ओपन, द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंग। तो ये एक्टिव वॉइस मानोगे, पैसिव वॉइस मानोगे, जीरो वॉइस मानोगे, क्या मानोगे, मानोगे ना। हाँ, बाद में अगर खूब डीप ग्रामर में पढ़े तो इस जो जीरो वॉइस में जो वर्ब यूज होते हैं उनको अर्गेटिव वर्ब्स कहते हैं। सारे वर्ब्स का जीरो वॉइस नहीं हो सकता। सोचो, मैं बताता हूँ, वी ईट मैंगोज, ईट करता है आदमी, मैंगोज ईट नहीं बोल सकते, मैंगोज ईट बोल सकते थे, तभी बोल सकते मैंगोज ईट, मैंगोज आर ईटन, मैंगोज आर, आम खाया जाता है, मैंगोज आर ईटन, ये मैंगोज आर ईटन, आम खाया जाता है, दिस इज पैसिव वॉइस, इसमें डूअर की बात नहीं है, मैंगोज आर। तो सारे वर्ब्स को आप जीरो वॉइस में नहीं डाल सकते, जीरो वॉइस के लिए कुछ ही वर्ब्स हैं। लेट मी गिव एन एग्जांपल, मैंने अंडे उबाले, आई बॉयल एग्स, आई बॉयल सम एग्स, ओके, मैंने कुछ अंडे उबाले, आई बॉयल सम एग्स। जब अंडे उबलने लगे, when the eggs started to boil, okay, जब अंडा उबलने लगे, when the egg boils, when the egg और the egg जो भी बोले, boil या boils मतलब उबलने लगे। अब देखो, जो अंडा को हम उबाल रहे थे वो अंडा उबलने लगा, उबालना उबलना एक ही वर्ब से हम दोनों बात बोल रहे हैं, बॉयल। मैंने पानी गर्म खौलाया, आई बॉयल द वाटर, पानी 100 डिग्री पे खौल जाता है, वाटर बॉयल्स, वाटर बॉयल्स। गौर करो इस सेंटेंस पे दोस्तों, वाटर, इसमें सब्जेक्ट क्या है, खुद से खौलता है, हम लोग खौलाते हैं, लेकिन फिर भी ये सेंटेंस सही है। ये कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिसके साथ आप ये दोनों चीज कर सकते हैं, यानी ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बना दे सकते हैं। देखो फिर से बताता हूं, वी राइट लेटर्स, लेटर्स राइट, कभी नहीं, लेटर्स कांट राइट, they don't have a hand, we write letters, letters are written, letters are चिट्ठियां, letters are written। मेरा बच्चा ध्यान दे, सीख जाएगा, थोड़ा सा ध्यान दे देगा तो तुरंत इसका जो है ना ट्यून आउट हो जाता है, जब चीजें थोड़ी भारी लगती है ट्यून आउट हो जाता है। गौर कर बेटा, वी राइट लेटर्स, वी मतलब हम लोग, वी राइट हम लोग लिखते हैं, वी राइट लेटर, हम लोग चिट्ठियां लिखते हैं, वी राइट लेटर।
but letters don't write. Letters are written. चिट्ठियां लिखी जाती हैं। यहाँ चिट्ठियां जब हम सब्जेक्ट बनाते हैं तो राइट वर्ब नहीं रह पाता, लेटर्स राइट नहीं बोल पाते। लेकिन सुनिएगा, when the egg fries, जब अंडा फ्राई हो जाए, when the egg fries, the egg fried in 2 minutes, अंडा 2 मिनट में फ्राई हो गया। the egg fried in 2 minutes, ये एग नॉर्मली ऑब्जेक्ट होता था। सोचो नॉर्मली क्या बोलते हैं, वी फ्राई एग, वी फ्राई एग। अब वही एग्स को आगे भी ले आए और फ्राई फ्राई रह गया, कोई दिक्कत नहीं है। एग्स फ्राई इन 2 minutes। You know, if you boil in this pot, eggs will boil in 2 minutes. Eggs will boil. यहाँ बॉयल वर्ब है और एग क्या है, सब्जेक्ट है, जबकि नॉर्मली बॉयल का ऑब्जेक्ट होता है एग। तो कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट बन सकते हैं, ऐसे वर्ब को अर्गेटिव वर्ब कहते हैं। मैंने दरवाजा खोला, आई ओपन द डोर। अब बोलिए द डोर को आगे लेके आइए, बोलिए द डोर, सही है ना? इसलिए ओपन कैसा वर्ब कहलाता है, अर्गेटिव। अर्गेटिव वर्ब का डेफिनेशन पता चला कि उसका जो ऑब्जेक्ट होता है वो आराम से उसका सब्जेक्ट बन सकता है, कोई गलती नहीं होगी सेंटेंस में। क्या ईट एक अर्गेटिव वर्ब है, ईएटी? बोल के देखते हैं, वी ईट पिज्जा, पिज्जा ईट? नो। राइट अर्गेटिव वर्ब है? नो। क्यों? देखो बोलते हैं वी राइट लेटर्स, लेटर्स राइट। कैसा सेंटेंस है, लेटर्स राइट? ये गलत हो गया ना, इसलिए राइट अर्गेटिव वर्ब नहीं है। तो अर्गेटिव वर्ब बहुत थोड़े से हैं इंग्लिश में, लेकिन उनको जानना चाहिए धीरे धीरे। और हम यहाँ तो अभी मैंने डिसाइड किया कि आपको एंटरटेन करूँ, थोड़ा एक्स्ट्रा बताऊं। अदरवाइज द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंग ओपन, समझ में आ ही गया, बिल्डिंग खुला। वो मैं उस टीचर की बुराई करने के चक्कर में फंस गया। राइट? नहीं तो इतना दूर तक जाने की क्या जरूरत थी। राइट? इसलिए कहते हैं दूसरों की बुराई ना करें, डोंट, yeah, don't criticize other people, look at your own faults. But I feel bad यार, when I meet teachers who say silly things, I feel bad कि भाई तू बंद क्यों कर दिया सीखना, तू टीचर बना, ठीक था, लेकिन सीखता रहता। मैं कौन सा जानता था, when I started in 2006, okay, I don't think I knew a lot of things. I just knew the most basic stuff about English. But then I didn't feel that it was enough. I always felt somebody will come and expose me. Somebody will come and expose me that I don't know anything about English. So that fear made me work hard. I worked hard because of that fear that somebody will expose me. Why other people are not so afraid of being exposed? Where do they get the confidence from? This is overconfidence. वो आदमी कभी किसी स्टूडेंट को उस लायक नहीं बना सकता जो मैं बना दूं। मेरे साथ अगर कोई 2 साल 2.5 साल बच्चा रहेगा और उस आदमी के साथ रहेगा, वो नहीं बना पाएगा, उसकी खुद की लिमिटेशन। बहुत ध्यान है, ठीक है? वो खाली गोरा चिट्टा था, ठीक, हाँ, और वो नहीं होता है ना कि वो कुछ लोग होते हैं जो देखने में बहुत ज्यादा अच्छे लगे, तो दैट इज ऑल हिज, आई विल से, दैट्स ऑल हिज पॉजिटिव वाज अबाउट हिज पर्सनालिटी। He was tall, he was attractive. And I'm pretty sure when you have somebody like that in front of you, and if they are talking to you in English, even if it is normal, simple English, you feel, हाँ हाँ बढ़िया टीचर होंगे, because of his style and everything. हम हैं देखने में ही डोम चमार जैसे। एंड यहाँ डोम चमार जाति की बात नहीं कर रहा मैं, सॉरी, आई डोंट बिलीव इन जाति, ओके? जस्ट नहीं, मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा, मैं बिल्कुल जाति में यकीन नहीं करता। आई एम जस्ट सेइंग, सॉरी, मतलब वो मुझे पता है ये वर्ड नहीं यूज करना चाहिए ऐसे, लेकिन देयर आर सम पीपल हु डू नॉट लुक वेरी नाइस बिकॉज दे हैव स्मॉल जॉब्स यहाँ करते हैं। आई हैव सीन सम डोम्स, दे आर वेरी वेरी गुड लुकिंग डोम्स एज वेल, या आई नो, गुड लुकिंग डोम्स, या, एंड डोमिन्स एज वेल। ओके, this is a crazy class. All right.
So yeah, do you think we should disrespect somebody because of their caste? Do you think we should do that? Nah, no caste is superior, no caste is inferior. हाँ, कोई कास्ट सुपीरियर और इंफीरियर नहीं होता, एब्सोल्युटली नॉट। है तो है, मानते हो तो मानो, लेकिन देयर इज नो सुपीरियरिटी और इंफीरियरिटी। ये नहीं कि ये कास्ट सुपीरियर है, बेटर है, ऐसा कुछ नहीं। वी आर ऑल ह्यूमंस। इक्वालिटी, equality is the best thing that you will believe in, that we are all equal. Individuals can be unequal, that's okay, but otherwise we are all equal. Nobody is unequal because of their identity. We are unequal because of our own weaknesses and qualities. Suppose you are a better singer than me, then I'm not equal to you. Maybe you run faster than me, I'm not equal to you. Maybe I'm a better cook than you. You are not equal to me. But not because of your birth, that you were born in XYZ family, that's why, because you were born in XYZ caste, that's why, because you were born in XYZ community, that's why you are superior. This is a very, very foolish idea. People are unequal because of their qualities. These are two sisters, but they will not be equal. You know that? One will be better in one way, the other will be better in some different way. So there will be inequality, but on a personal level, on an individual level, right? You and your sister, your sisters, everything is the same, but still you're two different individuals with two different personalities, weaknesses, different weaknesses. Your weaknesses are different, her weaknesses are different. Your strengths are different, her strengths are different. And that inequality is absolutely fine. But nobody is unequal because of their birth. Oh, you were born in that community, you were born in that caste, you were born in that place, you are unequal. No, sorry, that's not right. As humans, we are all equal. And it is crazy not to believe in it. Okay, where were we? I was talking about opened and ergative verbs, right? So a lot of verbs which are cooking verbs like fry, boil, okay, these are ergative verbs, क्योंकि जो आप फ्राई करते हो वो चीज फ्राई होता है। आप जिस चीज को फ्राई करते हो वो चीज फ्राई होता है। जैसे फ्राई द अनियंस, व्हेन द अनियंस फ्राई, ऐड द स्पाइसेस। देखो देखो कैसे अर्गेटिव वर्ब बना, फ्राई द अनियंस, इसमें अनियन क्या है बेटा? और बाद में बोल रहे हैं जब अनियन भुन जाए, व्हेन द अनियन फ्राइज, ऐड द स्पाइसेस। ठीक है, तो ये आइडिया समझ में आया कुछ? अच्छा बताओ, व्हेन द अनियन फ्राइज, प्रैक्टिकली खुद से फ्राई होता है कि हम लोग फ्राई करते हैं? लेकिन बोलने में क्या बोलते हैं? जब प्याज भुन जाए। तो इंग्लिश में भी इस तरह के आइडियाज हैं, इसलिए हिंदी और इंग्लिश बहुत सिमिलर लैंग्वेजेस, इसमें भी मिलते हैं, खोलना और खुलना, उबालना और उबलना। लेकिन लिखना और लिखाना करके मत फंस जाना, ठीक है? ये हिंदी में कर सकते हो, इंग्लिश में होता नहीं है। राइट इज द ओनली थिंग, और वो एक तरफ से होता है, वी राइट, गॉट इट? दिस पेन राइट्स वेल, दिस पेन, हाँ ये बोल सकते हैं, दिस पेन। इसीलिए एक्सपोजर मायने रखता है। तुम्हारे दिमाग में ये सेंटेंस नहीं आएगा अगर तुम ये सुनोगे नहीं तो। दिस पेन राइट्स बेटर, आई वॉन्ट दिस फॉर माई एग्जाम। दिस पेन राइट्स बेटर, ये कलम अच्छा लिखता है। अब हिंदी में बोलो या ये बोलो, इस कलम से अच्छा लिख सकते हैं, कलम कैसे 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 बोलेंगे? ये कलम अच्छा चलता है, राइट? या दिस इज हाउ वी से बिहारी, वी बिहारी से दिस, ये कलम अच्छा चलता है, दिस पेन राइट्स बेटर, आई वॉन्ट दिस फॉर माई एग्जाम। तो कई वर्ब्स को ऐसे आपको गौर करना है बेटा, आंखें खुली रखनी है। कॉम्बिनेशन, सब्जेक्ट और वर्ब, वर्ब सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन पे ध्यान दीजिए। ऐसे कई कॉम्बिनेशंस आएंगे जो हिंदी में समझ नहीं आएंगे। कल मैंने आपको पढ़ाया था, यूरोपियन स्क्वायर्स एंड कॉलोनियल हाउसेस सिट,
right next to Mexican market, busy Mexican markets and Indian handicraft. गौर करिएगा कैसे लिखा था. यूरोपियन स्क्वायर्स एंड कॉलोनियल हाउसेस सिट. अब हिंदी में बोलिए, कैसे बोल पाएंगे सिट, बैठना बोल पाएंगे? तो इसीलिए आपका काम है सब्जेक्ट और वर्ब को एक्नॉलेज करना कि दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है. दिल्ली लाइज, दिल्ली ऑन द रिवर यमुना. दिल्ली, आप कैसे बोलिएगा? दिल्ली लेटता है, दिल्ली झूठ बोलता है, केजरीवाल झूठ बोलता है. और दिल्ली नहीं झूठ बोलता है. ऑलराइट, चलो. दिल्ली लाइज, मैंने वोट करा था केजरीवाल को 2 बार. फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम व्हेन ही केम, हाँ, बिहार में भी करा मैंने. माय वाइफ मेक्स सो मच फन ऑफ मी. आई एम एक्चुअली वेरी एक्साइटेड फॉर चेंज. जो भी चेंज का ऑप्शन देता है ना, मैं कहता हाँ, इसको दे मौका. जो पहले से है ना, उनके से मेरा मन भरा हुआ है. आई नो दे आर नॉट गोना डू एनीथिंग, सो आई एम ऑलवेज अप फॉर चेंज. दिस टाइम आई एम गोइंग टू वोट फॉर प्रशांत किशोर. जो आदमी को खड़ा कर दे, अंधा लूला लंगड़ा, आई एम गोना वोट फॉर दैट पर्सन. एंड आई एम सेइंग इट ओपनली. आई विल. आई एम डन विद दीज ट्रेडिशनल पार्टीज. भाई कुछ नहीं करते भाई. अरे यार तुम बताओ, ये जो हमारा एमएलए है वो शहर में घूमे, उसको दिक्कत नहीं समझ आएगा कहाँ क्या करना चाहिए? फंड नहीं उसके पास. कर चाहता क्या है ये लोग? व्हाट डू दे वांट दीज पीपल? अपना ऑफिस में बैठना, पैसा कैसे कमाना, कौन सा ठेका में कितना कमीशन लेना, दैट्स ऑल दे वांट. दे डोंट केयर अबाउट द प्रॉब्लम्स. अरे भाई तुम बुला लो सारे वार्ड वार्ड कमिश्नर्स, वार्ड कमिश्नर, कॉल देम ऑल, हैव अ मीटिंग. सब जगह फोटो बोल के 10-15 फोटो लेके आ जा, खुद घूम ले भाई. I think 1 month it will take if you have the dedication to change the look of the city. People will be so excited to participate. Don't you think so? If we have a leader, people follow. I don't think these people really want to do anything. भाड़ में जाए जनता. Exactly, this is their motto. This is their motto. अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता. Someday we will have to participate in politics. जमानत जब्त करा के बैठेंगे हम लोग. All right. Now I really feel, क्या नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? What's the problem? I'm telling you, there are lots of people. They will, contribute financially if they come with a genuine, honest plan. Bhaiya, this is gonna change the place where you live. We have these plans. इतना इतना पैसा. People will contribute. लोग पैसा दे देंगे. Some people will not. 20-30% people will not. But a lot of people will say, हाँ भाई ले ले पैसा, सर अच्छा करते हैं, ढंग का करते हैं. I don't really respect them much, political leaders. Let's see. Where were we? Ergative verb clear? कुछ और बताओ? Some more ergative verbs? Okay. Give me a second. I will ask for a list. A list of ergative verbs. A list of ergative verbs. Common ergative verbs I'm going to tell you, okay? Very common. You know these. Break. बताओ. You break things, and things break. Things, the stick broke. Ready? All right. His leg broke. His leg. I dropped the glass and the glass broke.
हो गया। आई ब्रोक द ग्लास, ये तो हो गया। आई ब्रोक द ग्लास, आई ड्रॉप द ग्लास एंड द ग्लास ब्रोक। अब समझ में आया अर्गेटिव वर्ब का आइडिया? लेट मी गिव यू सम मोर। स्टार्ट, we started the match, we and the match started, we started the match at 2:30, the match started at 2:30। बोलने का तरीका थोड़ा सा अलग है, लेकिन बाकी एक ही है, बात एक ही है। हम लोगों ने 2:30 बजे मैच शुरू किया, मैच 2:30 बजे शुरू हुआ। Shall we continue? A new batch is starting, a new batch is हिंदी, नया बैच शुरू, we are starting a new batch, हिंदी शुरू कर रहे हैं। तो प्लीज ये लिस्ट बनाते जाइए, बिकॉज दीज आर कॉमन वर्ड। बोलो स्टार्ट नहीं जानते थे तुम, लेकिन इस तरीके से उतना सोच नहीं रहे होगे। अब थोड़ा देख लेना, दोनों तरह के सेंटेंसेस पॉसिबल हैं। ओके, राइट, स्टार्ट, ब्रेक, ग्रो, ग्रो। देखो समझाता हूं ग्रो कैसे। व्हाट डू यू नो अबाउट ग्रो? वी ग्रो समथिंग, वी ग्रो राइस, वी ग्रो wheat, rice grows in South India and wheat grows in North India. I'm just making a sentence. Facts nahi hai ye. Okay? Fact is, wheat grows in Punjab, Uttar Pradesh. Rice also grows in Uttar Pradesh and Bengal. Bengal is not South. Okay? Grow समझ में आया? अब बोलो, I want to grow my hair long. हिंदी, मैं अपने बाल को, I want to grow my hair. My hair grows very quickly. मेरे बाल जल्दी बढ़ते हैं। ग्रो दोनों तरफ से हो गया ना। अभी ग्रो का ऑब्जेक्ट था माई हेयर, अभी हेयर का ग्रो का सब्जेक्ट बन गया। माई हेयर ग्रोज वेरी क्विकली, तो आर्गेटिव हो गया ना। योर हेयर डजंट ग्रो वेरी क्विकली, योर नेल्स, okay, your nails grow very quickly. Great, good for you, isn't it? No? Why? Well, but girls like long hair and long nails too. They like long nails too. They look beautiful. Oh, they don't have long nails. Oh, मैं बचपन में यहाँ से मेरा शुरू हुआ था ये रेबेलियन। रेबेलियन मतलब विद्रोह। हर छोटी बात में जब वो रिलीजन घुसाए ना, ये नहीं करो गलत, मैं पूछू क्यों? बृहस्पति को दाढ़ी मत कटवा, क्यों? माथा खराब। एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग मोर एंड मोर रिसर्च, जानने लगे। क्वेश्चन पहले था, फिर बोला पागल है ये। तो आई काइंड ऑफ साइड, आई पुट माई सेल्फ ऑन द साइड। भैया आई एम नॉट इन दिस। थर्सडे को मत खाओ, क्यों भाई? चिकन नहीं खाओ थर्सडे को, कल तक ठीक था, आज खराब है। तो वैसे ही लॉन्ग नेल्स नहीं रखने थे, क्यों भाई? What? That's why sometimes I equate अंधविश्वास is equal to lipstick. All right. Let's don't मत बोलो, मैं बहक जाऊंगा। ठीक है, बस रहने दो। Let's continue with argative verbs. Okay. मेरा दिमाग नहीं मानता, बस इतनी सी बात है। क्यों नहीं? रीजन दो, आई विल स्टॉप।
That's not true. That's not true. That's not true in the first place. ये तो पहले यही बात गलत है. फिर एक और क्वेश्चन आ सकता है, but I will not ask that question. I love my life. Okay, let's see. तुम मत बकाओ हमको. Guys, focus on this. Where were we? Which examples did I give you? Grow, right? Yeah. You are growing very fast. तुम बड़े जल्दी जल्दी बड़े हो रहे हो, right? Growing up, okay. वहां up लगा देते. You're growing up very fast. Okay. ये अमरूद का पेड़ बहुत तेजी से बड़ा हो रहा है. This guava tree is growing very well. This guava tree is growing very well. सही है, कोई टेंशन. Okay. Let's see. We want to grow some guavas in our garden. We want to grow some guavas in our garden. Okay. Shake. All right. The wind is shaking the trees. The wind is, the trees are shaking. कितना आसान है इंग्लिश. अगर ऐसा होता सारा तो कितना अच्छा होता. ऐसी वॉइस की जरूरत ही नहीं पड़ती. कितना अच्छा होता. हम बोलते आई एट मैंगोज. मैंगोज कोई टेंशन नहीं होता. लेकिन नहीं, ऐसा कुछ ही वर्ब के साथ कर सकते हैं. डू यू वांट सम मोर? ओके. चेंज. I change the color. I change the color. The color changes. I change the color मतलब मैंने कलर बदल दिया. कलर बदल जाता है. The color, you read that line. The color of the stone buildings change or changes. The color of the stone building changes. Remember, you had that. तो सब चीजें चली जाती हैं सामने से, बस प्रैक्टिकली समझ बन जाती है आपकी. थ्योरेटिकली भले ही मैं ना बताऊं बहुत सी चीजें. You read that sentence or not? The color changes. Next word, close. बंद करना भी और बंद. The shop, 9 बजे दुकान बंद हो जाती है. 9 बजे दुकान बंद होती है. The shop closes at 9 o'clock. The shop closes at 9 o'clock. हम लोग 9 बजे बंद कर देते हैं दुकान. We close the shop at 9 o'clock. Close भी डाल दीजिए. Drop. I dropped the watch. लेकिन ड्रॉप को कैसे बोलेंगे? ड्रॉप के लिए थोड़ा देर के लिए बाद में, ओके, बिकॉज दिस इज नॉट द राइट एग्जांपल. ड्राई. 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 DRY. ड्राई. वेरी कॉमन. ड्राई. I dried my hair. I, मैंने अपने बाल सुखाए. मेरे बाल सूख गए. My hair dried very quickly. My hair. रोटी सूख जाता है गर्मी में. रोटी dries. Okay. The clothes dry very quickly in the summer. Okay. Dry मतलब समझिए सूख जाना. This tree will dry. This tree will means it will die and dry. Okay, whatever. तो dry एक दोनों तरफ से यूज कर सकते हैं. We dry something and something dries. We dry something. हम लोग चीजों को सुखाते हैं and things dry. चीजें सूख जाती हैं. End. Let's end this relationship. Let's end this class. दोनों जगह पे आपके ऑब्जेक्ट मिल गया है. Relationship and class. Let's end this relationship. Let's end this class. This class ends at 5. This relationship will end very soon. This relationship will end very soon. देख लीजिए, ये relationship जल्दी खत्म हो जाएगा. This relationship will end very soon. We will end this relationship. हम लोग इस relationship को
खत्म कर देंगे। तो आप अब गौर करते रहेंगे अगर सब्जेक्ट वर्ब के कॉम्बिनेशन पे, तो जल्दी सीखेंगे कि नहीं। तो आपका फोकस सबसे ज्यादा कहाँ होना चाहिए, किस दो वर्ड पे, उसके कॉम्बिनेशन पे। इस सब्जेक्ट के लिए वर्ब हो सकता है, ये सोचना है। सोचना क्या है कि अगर ये सब्जेक्ट है तो ये वर्ब हो सकता है। दिल्ली लाइज ऑन द रिवर यमुना। आप बोले कि दिल्ली अगर सब्जेक्ट है तो लाई हो सकता है, दिल्ली मतलब एक जगह, तो दिल्ली की जगह कोलकाता बोलो। ऑन द रिवर हुगली। इजी। ओके, एंड भी हो गया। फिल्म बीच, फिल्म खत्म हो जाती है हीरो के डेथ के साथ। द फिल्म एंड्स with the death of the hero. The film ends with the death of the hero. Next, finish. You finish something, something finishes. You finish something, ऐसे लिख लो, you finish something and something finishes. आप किसी चीज को फिनिश कर देते हैं और कोई चीज फिनिश हो जाता है। एग्जाम्पल दे सकते हैं। डिस्कशन बोल दीजिए, हो गया। वी फिनिश द डिस्कशन, हम लोगों ने डिस्कशन फिनिश कर दिया। द डिस्कशन फिनिश्ड। आसान है ना? ओके, so these are some very common, ergative verb. Stop. We stopped the movie. The movie, the movie is stopping very frequently. Sometimes when you're watching a movie online, it stops very frequently. Okay, stop. The movie stopped. And you can also stop the movie. Okay. Turn. We turn the car. The car turns. कार तेजी से घूम जाती है। The car turns very quickly and hits me. Okay, got it. Freeze, boil, cook. ऐसा ही कुक वाला बात करते हैं। सैटरडे को मेरे यहाँ खिचड़ी पकता है। On Saturday we cook खिचड़ी। या खिचड़ी cooks in my house। हालांकि ये अच्छा नहीं लगेगा। खिचड़ी cooks faster than chicken cooks faster than mutton। चिकन कुक, ये ज्यादा। चिकन cooks faster than mutton। हिंदी क्या हुआ? मटन से पहले पक जाता है। पक जाना है ना, यानी कि खाने लायक हो जाना। कुक, ये होता है कुक एज एन, इस तरह से। बाकी वी कुक, हम लोग पकाते हैं कुछ। वी कुक समथिंग। तो दिमाग में चलाना है, इस तरह से होते हैं वर्ब कि दोनों तरह से, लेकिन दे आर लिमिटेड। बाकी सब जगह एक्टिव और पैसिव करना पड़ता है। जैसे मैंने बताया, गांधी जी वॉज किल्ड। गांधी जी वॉज, somebody killed गांधी। There are quite a few common verbs in English which can be used this way. Chalo, let's look at the text. I think you enjoyed learning about ergative verbs a little bit. कुछ बोलचाल में बात आसानी हो जाएगी। The world's tallest building opened in January 2010. When did it open? It opened in January 2010. What opened in January 2010? The world's tallest building. It is Burj Khalifa. It is the world's tallest building opened in January 2010. It is Burj Khalifa in the Gulf Emirate of Dubai. It is matlab the world's tallest building is Burj Khalifa in the Gulf Emirate of Dubai. And it is
828 meters high. It is 800 and it took 6 years to build. Simple past sentences. It took 6 years to build. बनने में 6 साल लगा. It took 6 years to build. The tower has 160 floors. The tower has 160 floors. The tower has 160 floors. And more than 500,000 square meters of space. Overall space. Okay, we have this 3-story building. Okay. So suppose the area on one floor is, let's say, 800 square feet. So total area is 2,400 square feet. 800 here, 800 downstairs, 800 upstairs. Okay. So total we have 2,400 square feet area. This building has total area of 500,000 square meters. Total area is 500,000 square meters. Yeah. It has more than 500,000 square meters of space for offices and flats. So do people only work in Burj Khalifa or do they live in Burj Khalifa too? They live in Burj Khalifa too. How do we know this? Because it has space for offices and flats. So there are lots of offices there in Burj Khalifa and some people live there too. Shah Rukh Khan also has a flat in Burj Khalifa. It has the fastest lift. It has the fastest lift. No lift in the world is as fast as the lift in Burj Khalifa. How fast does it go? It goes at 64 kilometers an hour. It has the fastest lift, which goes at 64 kilometers an hour. जरा गौर करिएगा which और it का कैसे connection बन रहा है. It has the fastest lift, which goes at 64 kilometers an hour. It has the fastest lift, full stop. It goes at 64 kilometers an hour. जब सेंटेंस में फुल स्टॉप आया तो अब तो प्रोनाउन से शुरू करेंगे पिछले सेंटेंस के नाउन के लिए. It has the fastest lift, full stop. It goes at, all right. It has the fastest lift, which goes at 64 kilometers an hour. It has the highest mosque, full stop. It is on the 158th floor. And it has the highest swimming pool. It has the highest swimming pool, guys. It has the highest swimming pool. Yes, बोले बेटा. And someone is praying and the building is shaking. वो कहेगा earthquake. सुन लियो ऊपर वाले. Okay. Actually, you're right, because there are total 160 floors. So tell me, if you know a little bit of science and you have a little bit of common sense, then tell me. You know the top of the building moves. How much? 1 point? So the rest of the building also moves a little less. As we go down, the movement is smaller and smaller. But the mosque is on the 158th floor. Means just 2 floors below the top. So of course it also shakes a little. It also moves a little bit. Imagine when you are praying and suddenly there is strong wind. Then you start to dance while playing. Okay, but while praying, not playing, while praying, yeah. The highest mosque and the highest swimming pool. It has the highest swimming pool on the 76th floor. You are asking to imagine me that? I'm asking you to imagine. Imagine if the swimming pool collapses. Okay, imagine there is a big hole in the swimming pool. All the people on the ground floor, on the other lower floors, they will have a bath, unexpected bath. Some of them will be in the kitchen and they will suddenly, hey, what's this?
A swimming pool on the 76th floor. Amazing. That's why I said it's a technological marvel for humans. इंसानों के लिए क्या है ये? Technological marvel. MARVEL. Something जो बहुत अजीब हो, बहुत स्पेशल हो. Marvel. MAR. Technological marvel. मतलब ये टेक्नोलॉजी से हासिल किया ना. पॉसिबल था ये 200 साल पहले ऐसा बनाना? Of course not. Burj Khalifa is taller than Taipei 101 in Taiwan, which was the world's tallest building. So before Burj Khalifa, the world's tallest building title was for Taipei 101. It's a building in Taiwan. And it was 508 meters high. It was 508 meters high. Okay. It was the tallest building. And then Burj Khalifa came up. So for some time, Burj Khalifa was called the world's tallest building. And now it is going to be replaced by Jeddah Tower, which will be 1100 plus meters tall. The Burj Khalifa Tower can be seen. Can be seen. बोले तो हिंदी में देखा जा सकता है. अगर मैं बोलूं the Burj Khalifa can see, बुर्ज खलीफा देख सकता है. उसकी आंखें हैं क्या? बुर्ज खलीफा can be seen. ये अर्गेटिव वर्ब नहीं है. सी अर्गेटिव वर्ब नहीं है. Right? Okay. The Burj Khalifa Tower can be seen 95 kilometers away. So Patna is 90 kilometers away. So when Burj Khalifa is in Patna and you are in Bihar Sharif, you can still see Burj Khalifa. That's in Patna. 95 kilometers away. As you can see the moon so far away, like in India, the whole of the northern hemisphere, not all of it, but a big part of it can see the moon at the same time. India, Pakistan, and many other countries around, they can see the moon at the same time, very much at the same time, because it is so high. Exactly. I mean, think about the distance from here to Delhi, thousands of kilometers, but we both can look at the moon at the same time. So this building is so tall, 828 meters, it can be seen. It can be from 95 kilometers away. It can be seen 95 kilometers away, guys. We weren't sure how high we could go. We weren't sure. हम लोग sure नहीं थे. We weren't sure how high we could go. कितना ऊंचा हम लोग जा सकते थे. यानी कि कितना ऊंचा बनाएंगे इस बारे में पहले से प्लान. We weren't sure how high we could go. When they started the building, the construction, did they have 828 number in their mind? No, they didn't. They just wanted something tall, really tall, higher than Taipei, but they did not have 828 number in their mind. Okay, they just went on, and then they decided कि अब ठीक भाई यहाँ पर रोक देना है. Okay, we were not sure how high we could go, said Bill Baker, the building's a structural engineer. Somewhere in between, they decided कि भाई this would be the final height. Okay, 820. When they started, they didn't know. We were not sure. We weren't sure how high we could go. Bill Baker, the building's a structural engineer. It's a learning experience. When you do something for the first time, you learn a lot of things in the process. When you do something for the first time, then you learn something. So those people who built this building, they had already done their engineering at college, university, but they had never built something like this. So when they built it, they learned a lot of things in this experience. And that's why they call it a learning experience. For example, you have a relationship, okay? And in 2 years, your relationship comes to an end. अब बहुत sad होते हैं, लेकिन बाद में आप महसूस करते हैं कि आपने बहुत कुछ सीखा उस रिश्ते में रह के. तो आप उस रिश्ते को पॉजिटिवली देखेंगे तो कहेंगे इट वाज ए लर्निंग एक्सपीरियंस. इट वाज ए लर्निंग एक्सपीरियंस. मतलब आपने उसमें से कुछ सीखा. इट वाज ए लर्निंग एक्सपीरियंस. गॉट इट?
What did you guys laugh about? Tell me. कुछ सीख रहा है ये पूछा क्या? Are you learning? नहीं सीख नहीं रहा है. सीख नहीं रहा भाई. सीख चुके ऑलरेडी. Okay. You gave 2,000 rupees to your friend and he didn't pay you back. He said a few things and all that. तुम्हें कुछ समझ आया होगा. बोले ठीक है बेटा कोई बात नहीं. It was a कहते हैं कुछ होगा चाहे नहीं होगा तजुर्बा तो वही वाली बात है. If you do something, you always learn something. If you have the attitude to learn, then you will learn. I I made a lot of mistakes in life, and I think I learned quite a bit from them. जैसे हम देख रहे चीजों को फर्स्ट ऐसे नहीं, बाद में कुछ और दिखता वहां. Oh, okay, it was that way. I was stupid. I didn't understand it back then. So it's a learning experience. In life, people make mistakes, but that's all right as long as you are learning from them. It's a learning experience. Muhammad Ali Alaba. So normally what happens, a small team plays a match and lose the match. Then in the press conference, they say, we lost the match. They were a better team, but it was a good learning experience for the boys. It was good learning experience for the boys. सीखने को मिला, ऐसा बोल सकते हैं. Muhammad Ali Alabar, the developer of Burj Khalifa, said, who said? तो ये कॉमा देके डेवलपर ऑफ बुर्ज खलीफा क्यों लिखा? कल ही पढ़ाया मैंने. Who was Muhammad Ali Alabar? He was the developer of Burj Khalifa. यही समझना है आपको. ऐसे होता है कॉमा का फायदा. Muhammad Ali Alabar, the developer of Burj Khalifa, said that there were a lot of problems with the design. There were a lot of problems with the design. It means they did not decide the design once and stuck to it. They changed the design many times. There were a lot of problems with the design. Yeah. The most difficult parts, normally if you ask a normal person, what do you think is the biggest challenge when you're building Burj Khalifa type building? They'll say the height is the biggest challenge. How will you take the concrete that high? Normally people think height is the biggest challenge. That is what your instinct tells you. First reaction is height is the biggest challenge. Read. The most difficult parts weren't because of the height. So what common people think is not always right. People normally think, "Arey yaar, height is the real challenge." He said, no, the most difficult parts weren't because of the height. Height से परेशानी नहीं हो रही थी. The most difficult parts, जो सबसे ज्यादा बड़े बड़े मुश्किल जो आए, they were not because of the height. वो height की वजह से नहीं थे वो मुश्किलात. The most difficult parts weren't because of the height, but because of the winds. हवा चलती थी, हवा से दिक्कत. अब आप सोचे भी नहीं, हवा का तो ख्याल भी नहीं आएगा हम लोग के दिमाग में. When we think of building Burj Khalifa, हवा का क्या लेना देना भाई? But the most difficult parts were because of the winds, not because of the height. Yes, Shashi? बोल दे भाई. It's not a देख, तू भी आफिया के चक्कर में मत, आफिया के लाइन पे मत, रास्ते पे मत चल जा. आफिया इसीलिए परेशान ज्यादा हुई. अगर शुरू से वो मेरे साथ रैप बनाती कि जो बोल रही बिंदास बोल रही सामने से, कॉन्फिडेंस बढ़ता, गलतियां होती, सीखती. वो नथिंग सर करके कहाँ पहुंची. और उसकी एक बहन है, मेहनत तुम भी उतना ही करती हुई जितना वो करती. तुम ज्यादा तो नहीं करती, बहुत ज्यादा करती उससे. फिर तुमको लगता है वो तुमसे कम तेज है, तुम ज्यादा तेज हो. ये कुछ चीजें ना एटीट्यूड से भी फर्क पड़ जाता है. आप ना ये मत बनाया करो अपने टीचर से नथिंग सर वाला रिश्ता. ठीक है, नथिंग सर रुद्र भी करता है ना, उसकी भी देख स्थिति बदल रही है ना. तुम्हें बता रहा हूं, मेरे साथ प्रैंक होके जो बस अच्छा मजाक तो हम भी कर देते उल्टा पुल्टा, तो बोल दिया तो क्या ही हो गया. बस बोलो, उसमें अगर इंग्लिश है कुछ हेल्प करूंगा, ये था पॉइंट. ओके, बोलो 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 बोलो. Go on, come on, speak, go on. Go on, speak. All right.
The most difficult parts weren't because of the height, but because of the winds. He told journalists. अच्छा देखना, हाइट में एस नहीं है, लेकिन विंड में एस है. तो समझ में आ रहा है? महसूस करो. द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट्स weren't because of the height, ऊंचाई की वजह से नहीं था, बट बिकॉज ऑफ द winds. काउंटेबल नाउन के तौर पे ट्रीट करे ना. विंड इंग्लिश में काउंटेबल हो सकता है. ओके, तो बिकॉज ऑफ द विंड. अब बोलेंगे हवा कैसे काउंटेबल हो गया, ऐसा सोचेंगे ना. विंड मतलब हवा हमारे दिमाग में है ना दोस्तों. अब मैं आपको थोड़ा एक नया नजरिया देता हूं सोचने का. आप विंड मतलब हवा बाद में सोचना. पहले ये देखो कि विंड्स लिखा है तो ये प्लूरल नाउन है, हाँ कि ना. तो प्लूरल है तो ये काउंटेबल हो सकता है. अगर काउंटेबल हो सकता है तो हवा तो नहीं होगा ना, इसका मतलब ये सोचो. ठीक है, तो विंड बोलते हैं इंग्लिश में जो हवा बहती है. तो एक बार बही, फिर बही, तो बार बार बह रही है ना, इसलिए विंड्स हो सकता है. लेकिन जो एयर होता है मेरे बच्चों, दैट इज अनकाउंटेबल. जो जो एग्जिस्ट करता है, जो एग्जिस्ट करता है वो एयर है, और जो बहता है वो विंड है. गाट अभी इस तरह से प्रॉब्लम क्या है कि हमने एयर मतलब ही पढ़ा क्या, और विंड मतलब ही पढ़ा हमने, तो हम कैसे जाने पर. अभी यहां से उल्टा चलते हैं. पहले ये एक्सेप्ट करते हैं कि विंड इज अ काउंटेबल नाउन. विंड लिखा है ना प्लूरल, इट मीन्स इट इज अ. हाँ, तो व्हाट डज इट मीन. तो हवा तो पता है, तो कैसा हवा भाई. हवा दैट इज प्रेजेंट इन दिस रूम, दैट इज विंड. नो, wind is that you feel blowing. Okay, oh, there is a strong wind, there is a, मतलब बहुत जोर की हवा चल रही है. ठीक है, there is a strong wind. हिंदी में बोलो, बहुत जोर की हवा चल रही है. इंग्लिश बोलो, there is a strong wind. There is a strong wind. Okay, so the most difficult parts weren't because of the height. The most difficult parts were because of the winds. इंग्लिश और हिंदी मैच नहीं करेगा कई जगह पे, कई जगह पे मैच कर जाएगा. ठीक, नेक्स्ट. ही टोल्ड जर्नलिस्ट. हु टोल्ड जर्नलिस्ट? Muhammad Ali Alabar. The top of the building moves. What moves? The building moves. The top of the building moves. The top. पूरा बिल्डिंग नहीं मूव करता. The top of the building moves 1.5 meters in high winds. High winds. कॉम्बिनेशन देखिए, हाई और विंड का कॉम्बिनेशन देखिए. एडजेक्टिव और नाउन साथ में आए, गौर करा करिए. अरे तेरा हाई विंड. आप कभी बोले ऊंची हवा, कभी बोले बेटा, तो इसकी हिंदी ऊंची हवा करेंगे. क्या करेंगे बेटा? इन हाई विंड. ओके, okay, the top of the building moves 1.5 meters in high winds. Okay, here are some of the building's statistics. Statistics means numbers. Statistics means numbers. Here are some of the building's numbers. Statistics. 57 lifts. There are, the Burj Khalifa has, next, it cost 1.5 billion US dollars to build Burj Khalifa. Next, beta. Burj Khalifa has 1,044 luxury apartments. There are 1,044 luxury apartments in Burj Khalifa. Next, 12,000 people live and work in Burj Khalifa. Yeah, 12,000 people live and work there. एक बिल्डिंग में 12,000 लोग. सबको हेलो खाली एक बार बोलना पड़ जाए. ओह, कहाँ रहेगा भाईचारा. 12,000 people in one building. Imagine you are going down and you start to say hello to everyone who meets you on the way. Oh my God, it will take so much of time. 12,000 people. Yes. If they all decide to gather in one hall. And what if the earthquake comes? By the way, let me tell you that they have made sure that the building will not be damaged in earthquakes that we have seen so far.
If there is an earthquake which is beyond what we have seen, stronger, more damaging, then that's another story. But Richter scale 8, 8.5 will not damage the building because they have taken care of all these things. Otherwise, you know how many people will die. So they have taken care of all these things. It is 6 degrees cooler at the top. It is 6 degrees cooler. How much cooler? It is 6 degrees cooler at the top than at the bottom. It is 6 degrees cooler at the top than at the bottom. Next. It takes 36 men 4 months to clean the windows. It takes 36 men 4 months to clean the windows. Do a mathematics question. If there was one person to clean all the windows, how long will it take? It takes 36 men 4 months to clean the windows. So if there was just one person to clean all the windows, how long will it take? Look at the numbers at the book. Look at the numbers. Yeah. Come again. Why? Why are you giving me days? Give me months or years? What's the need to give me days? Hmm. So let's wrap up. It's 144 months, 36 multiplied by 4. 36 multiplied by 4. 36 men clean in 4 months. One man will clean in 4 multiplied by 36 because he has to do 36 times more time, right? So he needs 36 times more time. 36 multiplied by 4, which is 144, which is 12 years. Okay. So yeah, guys, you have 3 people that you have to listen to, right? You have to listen to 3 people talking about their cities, right? We will talk about it tomorrow. Bye-bye. Take care.